Hello students. So in the today's session, we'll be seeing the most specifically the diagrams of microprocessor 8085. Okay. So before starting it with the diagram, many of the students are getting confused with the names of the diagram as well as what is the exact question should be there for so and so diagram. Okay. So before starting it with the diagram, let me clear with the how the questions is being asked it in the board exams. All right. So the in the last session which we have taken the diagram like the block diagram of 8085. So the question is being asked as I hope you will be also writing it simultaneously with me. Draw a block diagram of microprocessor 8085. Okay, so अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, so which diagram you will be drawing it, which is nothing but the crystal connection diagram. Okay, so I'll be just specifying you the page number so that it will be clear. So in the textbook, it's having the page number 187. Okay, 188. जिनका नया textbook है, they'll be turning it to the 188. But still, for your understanding, I'll make it a hint like which is known as the crystal connection diagram. Okay, so crystal connection means what? To the extreme top left side mein, it is having the crystal, right? So which is getting connected with the x1 and x2. So that's why I have specified it as a crystal connection. Like x1 and x2 is being used for crystal connection, which is nothing but guys, crystal connection matlab kya hota hai? Yes. Inbuilt oscillator. Exactly. Very good. Excellent. So which is nothing but the inbuilt oscillator is there, which is acting it as the work of the oscillator. Then next question is there. हाँ, लॉग इन लॉग आउट होता है बेटा, बट प्रॉपर एकदम स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज अ क्रिस्टल कनेक्शन व्हिच इज नथिंग बट इट इज एक्टिंग इट एज अ इनबिल्ट ऑसिलेटर. ऑसिलेटर मतलब क्या? क्लॉक. तो क्लॉक का क्या काम होता है? लाइक लॉगिंग लॉग आउट का की तरह, राइट? सो that internally you have specified it. So exams में login logout नहीं लिखना है, you will be writing it as a crystal connection. Okay, so this is nothing but the which we call it as a hardware language. All right. Yeah. So the next question is, which we have done it in the last session. So that is nothing but the draw a block diagram. Same thing है, block diagram. तो इसके लिए most of the time the confuse कि अरे ये क्वेश्चन के लिए कौन सा डायग्राम होना चाहिए. So this is nothing but the chip. So if you see properly both the questions together, दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, which is nothing but a chip. Okay, so yes, one important thing I forgot to mention it over here, that is nothing but the marks. So ये जो है 3 marks के लिए पूछा जाता है इसमें. ठीक है, and ये जो है सिर्फ 3 marks के लिए diagram. Okay, so you should be clear that which question is consisting which diagram. Yes, now the further diagrams are there which we'll be gonna conducting it in the today's session. So that is nothing but the draw a once again functional block diagram of microprocessor 8085. So see अभी ये क्वेश्चन में भी क्या डिफरेंस है? सिर्फ फंक्शनल आया, यहाँ पर चिप आया. गेटिंग इट? सो एंड यहाँ पर सिंपली प्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर. तो यहाँ पर भी ब्लॉक डायग्राम है बट चिप के साथ, यहाँ पर भी ब्लॉक डायग्राम है बट फंक्शनल के साथ. सो इफ द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इज देयर देन यू विल बी ड्राइंग द सबसे छोटा डायग्राम है टेक्स्ट बुक में विच इज ऑन पेज नंबर 192. ठीक है, सो इसका वेटेज है 4 marks in the board exam.
Okay, and ये ज़्यादा प्रायोरिटी सिर्फ डायग्राम्स के ऊपर है. And let me clear you one thing, like around 8 marks के क्वेश्चन सिर्फ आपको डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में रहेगा. So yes guys, it's the scoring one. डायग्राम्स तो उतना प्रैक्टिस कर ही सकते हो आप. ठीक है, ज्यादा नहीं है डायग्राम्स. I'll tell you accordingly कौन से करना है. Now once again यहाँ पर भी draw a block diagram of, यहाँ पर एक ही टर्म चेंज हो रहा है, that is a generic microprocessor 8085. Okay, so this generic अगर पूछा गया, so which is on the page number 183 in your textbook. This too is consisting of the 3 marks. And the last question. So guys, there are total 5 diagrams are there. Okay. So यहाँ पर draw a block diagram of microprocessor नहीं है, यहाँ पर micro computer आता है. ठीक है. This too is also important one, 3 marks. All right, so which is on the page number 185. Okay, all right, so I hope everyone has written with me, and if it is not written, then please take a screenshot so that I can just change the screen. Done everyone? Did you aware, especially Narayana students, कि ये ऐसे questions में सिर्फ एक term का difference है? Did you aware with this? Yes, ma'am. Okay, fine. So ऐसे most of the time last moment पे mistakes होता है. So that's why just be, what we say, just keep the presence of mind while drawing the diagrams during the examinations. क्योंकि ऐसे mistakes होते हैं. अभी इसका ये starting के जो है 2 diagrams which we have done it in the last session. Okay, so now the third diagram which will be doing it, but before that I want to focus it on the first microcomputer diagram. Okay, so I'll quickly open that diagram. Yeah, so you can access it on the page number 185. If you're not having the textbook, you can see it over here also. So I hope everywhere it's visible. Okay, so abhi guys, ye diagram exactly what does it say? So it is just specifying to the user or to the, what we say, student, that this is the exactly functioning of an internal computer, how the computer works it. Okay, so did you aware how everyone that how the computer works it? Yes. Yes, guys. क्या हुआ? सब लोग नींद में है क्या? No one is talking. See, I want the interactive sessions. So I don't want that like simply continuously I'm going. Yeah, so the diagram which we are starting it is nothing but the block diagram of a microcomputer. Okay, so as this microcomputer diagram is there, so this is nothing but which will be specifying me the how the exactly functioning is being done of a computer. So guys, computer कैसे work होता है? Anyone? How computer works? So computer कैसे work होता है? Like whichever the data is being sended, right? Data कह सकते हैं या फिर I can also call it as the request. Okay, so whichever the data or request is being, signals are being transmitted, so which is being accepted by the input devices. Okay, फिर input device से क्या होगा data? It will be going to be moved into the CPU, which is nothing but a CPU के अंदर ही मेरा RAM, ROM and all the ICs are
connected over there. Okay, that is IC chip, जिसको हम लोग कहते हैं integrated circuit chip, and from there it is being displayed it on the display screen. Okay, so in short, जो भी डेटा है इनपुट डिवाइस में जाएगा, फंक्शनिंग होगा सीपीयू में, and then it will be coming it or it will be displaying it on the output screen, which is nothing but the display screen or the output devices, right? अभी ये देखने के लिए तो hardly 3 stages है, but if I'm coming it to this diagram shows to the user or to the student that how exactly in depth the computer works it. Okay, so the very first thing is like, suppose user has entered the value inside the keyboard. Okay, so this is the keyboard. So before coming to the keyboard, it's like a peripheral devices is there, right? Peripheral devices मतलब क्या होता है guys? Input device और output device. Yes or no? तो मतलब जो भी मेरे input devices, output devices है, उसको हम लोग technically peripheral devices कहते हैं. So peripheral devices is having their own interface. This is the very important term. Once again, I'll note it down over here. Peripheral devices have their own interfaces. Okay, like own क्यों प्रेशराइज्ड दिया हुआ है यहाँ पर? बिकॉज हर एक अपना डिवाइस जो है, उसके हर एक डिवाइसेस को इंडिविजुअली दे आर हैविंग देयर ओन इंटरफेसेस. सो इंटरफेसेस मतलब क्या? दैट इज नथिंग बट विच वी कॉल इट एज अ इंटरनली मीडियम इज द. Okay, so via that interface or via that medium only, my data is going to be getting transmitted, okay, from source place to the destination place. So exactly over here it's happening it that from the keyboard the data is going to transfer into the keyboard interface. Then from the keyboard interface the data will be moving it to the microprocessing unit, or I can call it as a central processing unit, which is nothing but the CPU. All right, and from here the data is being moved for the interpretation. तो interpretation के लिए मतलब ये address decoder में data जाएगा मेरा. Getting it? Address decoding में जाएगा. Okay, so address decoding means what it will be gonna happening it that it will be gonna translating the data from human understandable language to the machine level language. Yes or no? तो human understandable language मतलब क्या? जो भी हम लोग data type कर रहे हैं like English language, and which will be gonna translating it with the help of the ASCII code. So ASCII code is nothing but the American standard code for information interchange. All right, so with the help of the ASCII code it will be transmitting the language as well as interpreting the language into the binary level language or the machine level language, which is nothing but the zeros and ones, जिसको हम लोग कहते हैं. Okay, then next thing what exactly happens over here is like ये एड्रेस डिकोडर ने भी ट्रांसमिट कर लिया, ठीक है, ट्रांसमिट करके इंटरप्रेट मतलब ट्रांसलेशन हो गया. फ्रॉम देयर ये वापस डेटा यहाँ पर आता है ये ट्रैक में, एंड देन एमपीयू में जाके इट मूव्स फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब यहाँ से भी ट्रैक में while from the right side also. So from both the sides the data is gonna translating it and transfers it into the ROM. फिर रोम के साथ डेटा मेरा रैम में जाएगा, and via RAM it will be moving it to the chip select line, and then from the chip select line it will be gonna coming it into the display interface, and then it will be moving it to the display. मतलब ये मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा लाइक यूजर के साइड में, लाइक जो भी डेटा मैंने टाइप किया था. सो वो इंटरनली ये सारा वर्किंग ओवर योर ऑल दिस थिंग इज बीइंग प्रोसेस्ड इंटरनल and which is totally unaware to the user. So now guys you might be thinking कि अरे मैम ने तो अभी ये बताया कीबोर्ड से कीबोर्ड इंटरफेस, फिर मेरा ट्रांसलेशन हो रहा है एड्रेस डिकोडर में, वहां से डेटा ट्रांसमिट होता है दोनों साइड से, रोम में, रैम में, एंड देन फ्रॉम वाया चिप सेलेक्ट लाइन इट कम्स द डेटा टू द डिस्प्ले इंटरफेस एंड देन डिस्प्ले. सो अभी बाकी का ये सब क्या काम करेगा? डेटा बस है, पावर लाइन है, सप्लाई, क्लॉक, इंटरप्ट, ठीक है. सो आई विल बी क्लियरिंग इट दिस वन बाय वन. Yeah, before one more starting with the proceeding with the further one, this display is there. So ये display आया मतलब guys display का भी इंटरफेस होता है, जैसे अभी मैंने बताया हर एक peripheral devices का अपना अपना एक इंटरफेस होता है. Getting it? So that's why ये display इंटरफेस पे मेरा डेटा पहले जाएगा और फिर ये डिस्प्ले स्क्रीन पे होगा.
गेटिंग इट? सो लाइक सपोज अभी जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डेटा टाइप किया, देखो ठीक है, BDGH एनी रैंडम वैल्यू, तो अभी इसको कितना टाइम लगा गाइस? हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? few Hardly, millisecond. yes, hardly a fraction of seconds we can say it. Yes or no? So मतलब यहाँ पर ये जो अभी ये टास्क था, तो this all this task is being performed internally by this computer. मतलब अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर लाइक B एंटर किया, D एंटर किया, वट एवर, ठीक है, सो अभी जो भी डेटा एंटर किया वो कीबोर्ड से पहले कीबोर्ड इंटरफेस में गया, फिर MPU में एड्रेस डिकोडिंग में ट्रांसलेशन हो गया, फिर रोम रैम एंड देन कम्स टू द डिस्प्ले स्क्रीन. सो simultaneously अभी ये जो power supply ये क्या करेगा? This is going to be sending me this power connection. So for that purpose, this power supply is needed. Next thing, data bus. So as I have cleared this concept in depth in the last session also, so whichever the data or the signals are getting transmitted, so that signals are transmitted with the help of the buses only. और इसके लिए ये track में hand to hand this data bus and address buses transferring the signals according to the what we say request, like from the source to the destination. और फिर वो अपना अपना काम करेगा, एक यूनिडायरेक्शनल तो यूनि करेगा, डेटा बाई डायरेक्शनल तो बाई डायरेक्शनल, like that. And this is the power line. Okay, now important thing is clock, so which is nothing but doing the task of the oscillator. Like this clock is synchronizing the whole circuit. मतलब पूरा जो synchronization होता है मेरे circuit का या फिर मेरा what we say ओवरऑल जो कंपोनेंट है, तो उसको सिंक्रोनाइजेशन करने का काम ये मेरा क्लॉक कर रहा है. सो गाइज, clock is playing a very crucial role over here, and which is totally unaware to the what we say other users also, as well as to the other devices also. And the last is nothing but the interrupt line. Interrupt line मतलब क्या कि जो भी अभी जैसा अभी मेरा सेशन चालू है and in between some student has speaked, so क्या हुआ, तो मतलब my process was going on and you have interrupted me. Same way ये ISR routine है, जैसे हम लोग ने interrupt topic पढ़ा था, if you remember, right? तो मतलब यहाँ पर भी interrupt line is nothing but the ISR, interrupt service routine जिसको हम लोग कहते हैं. So जो भी मेरा process चल रहा है, it should be goes on smoothly way. तो कोई इंटरप्शन लेवल ना हो, इसके लिए ये इंटरप्ट लाइन इज देयर, सो दैट द रनिंग प्रोसेस शुड नॉट गेट स्टक अप समवेयर और शुड नॉट गेट what we say any sort of obstacles over there. Getting it? So this is the explanation of this microcomputer diagram. I hope clear everyone. Yes, ma'am. Okay, others? मैम वो क्लॉक का बता सकते हैं एक बार? क्लॉक बेटा क्या करता है, ये पूरे सर्किट को सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है. इट इज सिंक्रोनाइजिंग द होल सर्किट.